So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the second part of Geography Previous Year Question Series. So basically, in the last Tuesday, we had started this series where I had discussed the part 1 of the previous year questions for Geography. पिछले ट्यूसडे को 7 बजे शाम में हम लोग की क्लास लेते हैं जिसमें ट्यूसडे 7 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कराते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का. ठीक है. सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कराया था एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट. 7 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो लेट अस बिगिन. और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, सो प्लीज गो एंड वॉच द पार्ट 1. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड इट, so first subscribe to the channel, go to the live section. तो आप live section में जाओगे तो ये आज का part 2 है, ये part 1 है. And here I have discussed in detail all the national parks and wildlife sanctuary also. And ये बहुत important है because national park wildlife sanctuary से कई बार question आते हैं CUET में. A lot of times questions are being asked from national park and wildlife sanctuary. Okay, that is why this is actually very very important. तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो. फर्स्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड हियर इज द प्लेलिस्ट. तो यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना एंड यू विल गेट ऑल दोस वीडियोस. ठीक है. सो आप उसमें भी जा करके सारे वीडियोस देख सकते हो. सो दीस आर द 4 वीडियोस जिसमें हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी PYQs आल्सो. ओके. मेनी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट्स रिपीटेड. इसमें बहुत सारे PYQs जो हैं या उसका थीम जो है वो रिपीट होता है. ठीक है. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. We have discussed part 1 of geography and this is the part 2. So this series happens every Tuesday at 7 PM. ठीक है. हर Tuesday को 7 बजे शाम में ये क्लास होती है. So please watch it. That would be very very beneficial. और tomorrow Wednesday को 7 PM पे we are having current affairs revision. ठीक है. So ये आपको बताना चाहिए. Okay. That is what you should be knowing about. Now, so let us begin. देखो मैंने जो ये वाला part 1 था इसमें मैंने सारे national park wildlife sanctuary prominent ones, all important national parks and wildlife sanctuary I had discussed in this class. Okay, so if you have not watched it, please go and watch it because when I discuss today's class, I believe that you all should be knowing the answers. ठीक है. तो जैसे ये वाला है, ये previous year question है कान्हा national park. So ये सब मैंने करा रखा है यहाँ. So I've already discussed in this geography part 1 में. So I believe that you all should be doing it. So where do you find Kanha National Park? Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat. What is the right answer? बताइए. So if you know the answer, I am waiting. आपको अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर बताइए चैट में. So कान्हा नेशनल पार्क you will find it in the state of मध्य प्रदेश. ठीक है. कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कूनू पलपुर नेशनल पार्क हो गया, ये सब काफी न्यूज में फिर है ना. That is what you should know. तो ये this is the state of मध्य प्रदेश और यही आपको मिलेगा कान्हा टाइगर रिजर्व ये. ठीक है. That is what you should know it. Okay. और यहाँ पर आपको मिलेगा कूनू पलपुर नेशनल पार्क, कूनू पलपुर. और ये न्यूज में इसलिए दिस हैज बीन इन द न्यूज बिकॉज़ 1 or 2 years back we brought cheetahs, है ना. Cheetahs were brought from Namibia and South Africa in this national park. तो ये काफी न्यूज में था. ये भी मध्य प्रदेश में ही मिलेगा आपको. That is what you should be doing. You will find this also in Madhya Pradesh, this Kunu Palpur National Park. ठीक है. Okay, the next is which of the following is not the member of SAARC? So ये international relation का भी question हो सकता है और अगर mapping में कहें तो geography का भी question हो सकता है. It can be part of both. So please tell me SAARC में कौन सा country नहीं है? So first of all, you should know the full form of it. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. ठीक है. ओके. तो इसमें क्या है? इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया. ओके. एंड इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 8 कंट्रीज. तो इसमें साउथ एशिया में चाइना नहीं आता है. चाइना इज नॉट इन साउथ एशिया. ठीक है. इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया में जनरली मानते हैं लोग. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. नॉट द मेंबर. देखो ये भी ख्याल रखना. बी केयरफुल whenever you are sitting in the examination hall and you see these types of word not, you have to be careful. Because if you miss the word, then of course you're gone. तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा ठीक से.
So be careful. That's very, very important. So C is the right answer to this question. अब देखो ये SARC है, South Asian Association for Regional Cooperation. You should remember more about SARC first, where it is headquartered. So the headquarter is in Kathmandu. या headquarter की जगह actually word used is secretariat. ये word लिखते हैं. Where is the secretariat of SARC? So the answer is Kathmandu. ठीक है. फिर दूसरा होता है 8 countries members हैं. So these are the 8 members. First I'll show you on the map so that you can remember, and then we will discuss it. ठीक है. So 8 countries. So I hope you are aware. This is called as South Asia. जहाँ पर इंडिया है ना लाई करते हैं. This is called as South Asia है ना. We are a part of South Asia. That is why we are a part of the grouping called as South Asian Association for Regional Cooperation. ठीक है. अब देखो ये साउथ एशिया है. Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and there is one more island country यहाँ पर ऐसे. ठीक है. And I'm sure you must have heard its name, Maldives. पिछले 1-2 सालों में काफी न्यूज में था. Its capital is Male. ठीक है. So these 8 countries are member of SARC. Okay. अब देखो पूछा क्या था, not a member, तो चाइना member नहीं है. देखो चाइना यहाँ पर है. China is not a member of SARC countries. अब जो South Asian countries है, these 8 countries grouping, these are called as SARC countries. अब इसको याद कैसे करना है? So this is one way of remembering it with the help of map. एक तो आप मैप के जरिए याद कर लो जो मैंने बताया. दूसरा ये है कि अगर आपको शॉर्टकट बताए तो this is MBBS pin. This is the shortcut. ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो. जैसे M से मालदीव्स हो गया. Okay. Just hold on for a second. मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ. M से मालदीव्स. So B से भूटान. B से बांग्लादेश. ठीक है. S से श्रीलंका. So P से पाकिस्तान. A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, and N से नेपाल. ठीक है. So that is how you can remember it. MBBS pin. ठीक है. तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो. These are the 8 countries of SARC. Now similarly एक और grouping होता है. That is what we call it as BIMSTEC. ये भी अक्सर न्यूज में रहता है. And recently the BIMSTEC summit happened in Bangkok. Recently तो नहीं कहेंगे, मतलब 1-2 महीना पहले, 2-3 months back है ना. We had said Bangkok में यहाँ BIMSTEC summit हुआ था. Where Honorable Prime Minister of India also visited there. ठीक है. अब जो BIMSTEC है उसमें कितनी कंट्रीज है? There are 7 countries. ठीक है. So उसमें कौन-कौन सी कंट्रीज है? So these are the countries: Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Myanmar, and Thailand. So these are the 7 countries which are a part of BIMSTEC. ठीक है. That is what you should be knowing. Now the thing is, अब आप कंफ्यूज करोगे सर SARC में कौन सा कंट्रीज है, BIMSTEC में कौन सा है. So I'll help you remember. ठीक है. तो these are the red वाला है. This red one is actually SARC countries है ना. ये SARC countries है. अब हमको BIMSTEC country पता होना है. I want to know about BIMSTEC country. So what you are supposed to do is cut Pakistan, cut Afghanistan, cut Maldives, and add Myanmar and Thailand. So it will become BIMSTEC countries. अब देखो ये वाला BIMSTEC country हो गया. So this black one is 7 BIMSTEC country. तो याद रहेगा. That is why I am showing you with the help of the map so that you can remember it. ठीक है. So तो ये जो black one है जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, these 7 countries are BIMSTEC countries. ठीक है. I hope it is clear and I think very simple, crystal clear. So BIMSTEC are being asked. ठीक है. BIMSTEC का जो secretariat है, जैसे we have shown कि SARC का secretariat काठमांडू में. Similarly, the secretariat of BIMSTEC is in Dhaka, Bangladesh. ठीक है. The capital of Bangladesh is Dhaka. ठीक है. याद रहेगा. Let's move on to the next one. Out of which of the following, which is the largest exporter of cotton textile? देखो, cotton textile यानी कपड़ा बनने के बाद है ना. So US, China, Japan और India. So basically, this actually keeps on varying also sometimes. But I checked it today and I got to know that it is China. कभी-कभी ऊपर नीचे भी होता है. But if you see it, है ना. That is, China is the largest exporter of cotton textile globally with that percentage नहीं याद रखना, but rough idea होना चाहिए ना. तो textile यानी कपड़ा बनने के बाद, एक होता है raw cotton यानी cotton बस produce हुआ, एक होता है cotton बनने के बाद it is sent in the textile industry and a cloth is made. तो ये cotton textile यानी after the cloth is made. So it is actually China. B is the right answer. और आपको पता भी होगा, I hope you are aware nowadays China is very much ahead in these things, manufacturing and technology. So B is the right answer. The next is which state or union territory has higher life expectancy? I agree it was a very difficult question. ठीक है.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ कितनी होगी, and that is what the life expectancy means. So basically and it's very difficult कि सारे states का remember हो, तो I have actually taken it from the MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation की website से मैंने सारी life expectancy चारों states की निकाली. So I think the answer would be Punjab. Here, let me show. देखो अगर आप देखोगे पंजाब की total life expectancy है 72.5. ठीक है. So let me write it here. So it's 72.5. उत्तर प्रदेश की कितनी है? 66. So this is 66. Madhya Pradesh ki is how much? Is 67.4. So Madhya Pradesh ki is 67.4. And Uttarakhand ki is 70.6. So Uttarakhand ki is 70.6. ठीक है. So अब देखोगे. So the right answer is A, है ना? And I know it was a very difficult question because knowing the life expectancy of all the states are difficult. ठीक है. So here the right answer is A. ठीक है. Now the next is Jamshedpur is situated on the bank of which river? Can anyone tell me? Godavari, Damodar, Subarnarekha, Son. क्या सही जवाब है? अच्छा, जमशेदपुर कौन से स्टेट में ये बता दो. Jamshedpur was set up by Tata company, है ना? Jamshedji Tata. I'm sure you must have heard it. So there's a Tata steel plant. I mean, Tata plant is there in Jamshedpur. In fact, the entire city, है ना, was set up. It's a we can say as a result of a Tata plant, है ना? वो एक नया शहर ही बना दिया गया उसकी वजह से. So it's situated on the bank of which river? देखो कुछ तो आप लॉजिक से ही बता सकते हो. I hope you are aware it is in Jharkhand. ये तो बताओगा, ठीक है. And इतना तो बताओगा गोदावरी is in south. Yes, Jharkhand. Yes, Basma, Samrin, you're right. Jharkhand state में, right? So गोदावरी साउथ में, झारखंड इस बिहार के से जस्ट नीचे है ना, जस्ट साउथ ऑफ बिहार. तो ये तो होगा नहीं, ठीक है. नाउ दामोदर रिवर इज देयर, झारखंड और वेस्ट बंगाल के आसपास है. चलो ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है. सोन जो है वो बिहार में जाती है, वो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अचनाकमर अमरकंटक, ठीक है, छत्तीसगढ़ यूपी बिहार की तरफ होती है. ये भी झारखंड में नहीं है. सो आप 2 और 3 में कंफ्यूज कर सकते थे, तो चलेगा, ठीक है. द आंसर इज सुबर्णरेखा. इट्स अ वेरी फेमस रिवर, झारखंड जमशेदपुर पासेस. It's having place at deposits etc. So the right answer is C. ठीक है. तो मैं दिखा देता हूँ. Let me show in the map. तो ऐसे कुछ है ना, तो मान लो ऐसे गंगा रिवर जा रही पटना से. दिस इज गंगा. आई एम राइटिंग G फॉर गंगा, ठीक है. यहाँ पे कहीं पे आपको सुबर्णरेखा मिलेगी. ये जो जमशेदपुर है, हाँ, दिस इज सुबर्णरेखा, ठीक है. That is what you should know. So the right answer is C is the right answer, or option 3 is the right answer, ठीक है. सोन रिवर यहाँ पर ऐसे छत्तीसगढ़ की बॉर्डर ऐसे निकलती है और गंगा में जाके मिलती है पटना के वेस्ट में. दिस इज सोन रिवर, ठीक है. और गोदावरी तो नीचे होगी, महाराष्ट्र से निकलती है. दिस इज गोदावरी, ओके. और एक और जो रिवर है दामोदर, ये भी दिखाता हूँ. दामोदर यहाँ पे कहीं पे दामोदर रिवर होगी, ठीक है. और इसको सॉर ऑफ बंगाल वगैरह भी कहते हैं. विल डिस्कस इट जस्ट. The next is India is the dash largest country in terms of area. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. These are taught in school days. 5, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है. बताइए. What should be the answer? These are previous set questions and you all should be knowing it. Please tell me what is the right answer. Ideally, you should be knowing the ranking. कि सबसे largest, then second largest, third largest, like that. You should know this. Yes, option 3, 7th largest. Yes, Basma Samrin, you're right. So the largest is Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia, India. है ना, Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia, India. ये तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है. This is what you should remember. So the largest country area-wise would be Russia, then Canada, then China, then USA, Brazil, Australia, then India. Now, okay, this is actually a country's, है ना, area-wise, है ना. Now let's talk about continent. So continent भी पता होना चाहिए. I hope you are aware. So the largest continent is Asia. Asia is number 1. Asia. Then second is Africa. This is Africa, yellow wala. Asia, Africa. Then third is North America. Asia, Africa, North America, South America. Antarctica is 5th. Then 6th red wala, Europe. And then last is Australia. Australia continent जो होता है, it includes Australia, then Papua New Guinea, then New Zealand, and the other islands also.
ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए. प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर बिकॉज दिस इज आल्सो आस्क्ड ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना. तो और कंट्री वाइज मैंने बता दिया. रशिया सबसे बड़ा है, देखो रशिया, देन कनाडा, कनाडा काफी बड़ा है, देन चाइना, देन यूएसए, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया कंट्री. ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है. देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो सिर्फ हिस्सा है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया कंट्री. एंड और अगर पूरा जो है द रेस्ट, द एंटायर, दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, रेड वन. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ठीक है, ठीक है. सो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन द सेवेंथ वन इज इंडिया. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. The next is Bharatpur Bird Sanctuary is located in Rajasthan. It is also known as what? तो ये हमारी क्लास लिया था, मैंने बताया था जो लाइव सेक्शन पे जाना. और जो पार्ट 1 है, today's we are taking part 2. In part 1 I have discussed all the national parks and wildlife sanctuary. और you can watch it in our playlist also. Playlist में भी जाके देख सकते हो, view full playlist पे क्लिक करके. ठीक है. So here I had discussed it that Bharatpur Bird Sanctuary is in Rajasthan, earlier known as Keoladeo National Park. This is also known as today. ठीक है, so B is the right answer. You should be knowing about. ठीक है. The next one is the largest saltwater lake. हाँ, कुमारी भावना, you were right. Option 2 was the right answer. Largest saltwater lake in India. आपको तीनों पता होना चाहिए. Largest saltwater lake, freshwater lake, and I would say brackish water lake. Actually इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. देखो, I think there is some mistake in the question. Largest freshwater lake is Wular Lake. ठीक है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में मिलेगा ना. Chilka Lake is largest brackish water lake. Brackish water means it is a mixture of fresh water and it is somewhere between salt water and fresh water. मतलब बीच में कहीं पे लो. Yes, Sambar Lake is the right answer. Yes, कुमारी भावना. पता नहीं यहाँ मेंशन नहीं, I don't know, like it should be Sambar Lake. थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस में इश्यूज हो गया. So this is the largest salt water lake. It's a salt, it's a Sambar. This is near Jaipur in Rajasthan. ठीक है, तो मैं मैप में दिखाता हूँ, है ना. करेक्ट. हाँ, तो यहाँ पर वूलर लेक मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में. वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. मैं फ्रेश लिख दे रहा हूँ. फिर ओडिशा के ईस्ट कोस्ट में लैगून है, ये है ना, लार्जेस्ट लैगून. दिस इज कॉल्ड एज छिलका लेक. ये ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक. ये लार्जेस्ट लैगून ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट इज लैगून. एक चीज होता है पढ़ना जाके, व्हाट इज लैगून. ठीक है, और राजस्थान में जयपुर के पास यहीं पे सांभर लेक, एंड दिस इज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. दैट इज व्हाट यू शुड नो. ठीक है. The next is one of the Harappan site known as Kalibanga is associated with which of the following state? This is actually Indus Valley civilization site or Harappan civilization. I'm sure you must have heard Indus Valley civilization or Harappan civilization. So इसके बहुत सारे sites है, famous sites हैं. So एक Kalibanga एक famous site है. Where you will find this? कहाँ मिलेगा? This is actually in the state of Rajasthan. A is the right answer. ठीक है. देखो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट था वो इस रीजन में था. That was the part of Indus Valley civilization. Okay, or what we call it as Harappan civilization. Yes, option 1 is the right answer. Yes, कुमारी भावना. हाँ, अब देखो यहाँ पे धोलावीरा मॉडर्न डे गुजरात में लोथल. तो ये वाला जो है बिहार के, इंडिया के गुजरात वाले रीजन हुआ. ठीक है, फेमस. ये यहाँ पर है कालीबंगा. तो ये वाला राजस्थान हो गया इंडिया का. सो कालीबंगा राजस्थान में आएगा, और राखी गढ़ी जो हरियाणा में आएगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. और भी बहुत सारे साइट्स है ना. देखो मैंने दिखा दिया कालीबंगा. तो ये वाला इंडिया में राजस्थान वाला एरिया हो गया. इसमें कालीबंगा पूछा गया था. राखी गढ़ी इज इन हरियाणा. धोलावीरा एंड लोथल आर इन गुजरात. And rest Mohenjo-daro is in Pakistan के सिंध में. Sindh in Pakistan. This is also a very famous site. Then Harappa is in Pakistan's Punjab.
because there is Punjab in India also, there is Punjab in Pakistan also. ठीक है. These are famous cities of Indus Valley civilization. तो आपको पता होना चाहिए. Now, this is very important. Actually, please tell me the sharing of the boundaries and the countries sharing the boundaries and all. So, borders का नाम पूछा गया है, ठीक है? And if you tell me, I'll be very happy to know. I'm waiting for the response. Please tell me. देखो 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. डूरन लाइन तो बहुत फेमस है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच. अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया बिकॉज वो जब एग्रीमेंट साइन हुआ था 1878 में, दैट वाज देयर. सो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच है and 49 parallels between US and Canada. So the answer is 2341. 2341. So the answer is option 1. मैं बता देता हूँ. Let me show. So this is India. This is equator. 0 degree equator. ठीक है. ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है. ठीक है. So एक कोरियन वॉर हुआ था. If you have read NCERT book class 11th or 12th में you will find it. Korean War. So उसके बाद 1953 में आर्मस्ट्रेस एग्रीमेंट साइन हुआ और this border, this 38 degree north parallel, north latitude was considered as actually a part of this agreement. तो नॉर्थ और साउथ कोरिया को 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड करता है. और यूएस और कनाडा को उसको मेडिसिन लाइन कहते हैं. 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मेडिसिन लाइन आल्सो नोन एज. ठीक है. देन ये हो गया. डूरन लाइन जो है मैं दिखाता हूं. दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड एज डूरन लाइन. ओके. बट यहाँ पर जो है ऑप्शन में लिखा था इंडिया और अफगानिस्तान. व्हाई? बिकॉज़ व्हेन दिस एग्रीमेंट वाज साइंड, डूरन कमीशन वाज सेट अप इन 1878. ऑफ कोर्स वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था. इट वाज एन अनडिवाइडेड इंडिया. ठीक है. तो इसीलिए उस हिसाब से, अदरवाइज अगर आज पूछा जाए, आइडियली द आंसर शुड बी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. Another one is मैकमोहन लाइन पूछा हुआ है ना. So basically in the state of Arunachal Pradesh, this is the state of Arunachal Pradesh. ठीक है. ये अरुणाचल प्रदेश है. अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ बॉर्डर टच करता है ना. So ये वाला जो बॉर्डर है, this one, this is called as मैकमोहन लाइन. So this is the border of India and China in northeast. ठीक है. So that is what you should be knowing. And these are very prominent lines. आपको पता होना चाहिए. फिर एक और पूछते हैं which is not there right now, but इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच है. This is called as Radcliffe line. Please read about this. It is a line bordering India and Pakistan as well as India and Bangladesh. ठीक है. Radcliffe line, that is called. So these are prominent lines you should be knowing, and it's a part of geography or international relation, whatever you can say. The next is, this question was asked कि ये rivers का name है या cities का, और ये इसका like nicknames कह सकते हो एक है. So you have to tell me. देखो एक तो मैंने बताया था उदयपुर को we had discussed. I have told you ना कि previous year questions are important. This is called a city of lakes. Yes, है ना. तो वो कौन सा किससे रिलेटेड हो, मतलब लेक्स बहुत अच्छा पॉजिटिव, यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं. वेनिस ऑफ द ईस्ट हो गया. वेनिस इज द प्लेस इन इटली. आपने सुना कैसा वेनिस ऐसा होता है? हैव यू सीन दिस वेनिस? आपने देखा होगा, लोग जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे शहर में ही पानी जमा रहता है, मतलब इट्स लाइक दैट. और उदयपुर इज आल्सो फेमस फॉर लेक्स, इसलिए उसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं. देन सौरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर. अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे. सौरो ऑफ बिहार इज कोसी. कोसी नाम ही एक कोस इन हिंदी मींस cursed, the river which is having a curse or something like that. Boston of India is Ahmedabad. ये टेक्सटाइल कपड़े वगैरह और इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है. So the answer is 4, 1, 2 and 3. 4, 1, 2, 3. The right answer is option 3. Yes, Basma Sambreen and Kumari Bhavna, you both are right. C is the right answer. Very good. ठीक है. तो दामोदर रिवर को सौर ऑफ बंगाल कहते हैं. तो वो यहाँ पर है दामोदर रिवर. यहाँ पर ये गंगा रिवर जा रही है ऐसे, और यहीं पे समवेयर दामोदर रिवर मिले. यहाँ पे हुगली है ऐसे, ये हुगली है, और हुगली की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है दामोदर. ठीक है. इट इज इन झारखंड एंड बंगाल रीजन. सौरो मतलब क्या होता है? परेशानी लाती है. कॉजेस फ्लड्स इन दिस रीजन. ओके. कोसी यहाँ पर नेपाल से आती है और बिहार में मिलती है. दिस इज कोसी. इट कॉजेस फ्लड्स इन नॉर्थ बिहार. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सौरो ऑफ बिहार. बिहार की परेशानी, मुश्किल. एंड दामोदर इज सौरो ऑफ
वेस्ट बंगाल, बिकॉज ये वेस्ट बंगाल है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सिटी ऑफ अहमदाबाद को बॉस्टन वगैरह कहते हैं, बॉस्टन ऑफ इंडिया। बॉस्टन अमेरिका में एक जगह, सो जिस तरह वहाँ बिजनेस, कमर्शियल, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, वैसे ही लाइक दैट। सो हियर इज हियर इज अहमदाबाद इन गुजरात, and this is Udaipur in Rajasthan, है ना, which is famous for its lakes and hence it is called as Venice of the East। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस, ये सब फिल्म्स वगैरह में भी दिखाए जाते हैं, यहाँ बहुत सारी शूटिंग्स वगैरह होती है वेनिस में, तो है ना। The next is here is the next question and please match the following। ये sanctuaries है, इनफैक्ट यहाँ पर इस नाम की हाँ ये भी मैंने इनफैक्ट कुछ हद तक बताया हुआ है क्लासेस में। पार्ट 1 में मैंने बताया था, एक बताया था दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, मैं स्टिल रिमेंबर। तो बी का 1 है, अगर इतना ही पता होता तो आप कम से कम ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। ठीक है, अचना कमर अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर नर्मदा रिवर स्टार्ट्स, नर्मदा एंड सोन बोथ। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, है ना। देन चंद्रप्रभा रिवर जो है, एक चंद्रभागा है, जो चंद्रभागा रिवर वुड बी महाराष्ट्र, अगर चंद्रभागा लिखा है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो, बट चंद्रप्रभा रिवर वुड बी इन यूपी, है ना। सी का 3, लेट मी वेरीफाई। हाँ, कर्मनासा, एक्चुअली बिहार यूपी बॉर्डर पे कर्मनासा रिवर, लेट मी शो। देखो, दिस इज गंगा रिवर, इट इज गोइंग लाइक दिस, है ना। इसके ट्रिब्यूटरी है, दिस इज कॉल्ड एज कर्मनासा रिवर, दिस इज गंगा। One of its tributary is called as Karmnasa, which is actually a border of Bihar and UP. Okay, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है चंद्रप्रभा, छोटी सी रिवर होगी, इट्स अ वेरी स्मॉल रिवर, है ना। दैट इज व्हाट यू शुड नो। एंड भद्रा रिवर इज इन कर्नाटक। सो द राइट आंसर इज 4 1 3 2 4 1 3 2। यस, ऑप्शन 1। यस, कुमारी भावना, राइट, वेरी गुड। अच्छा, कमर दिखा देता हूँ। दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज मध्य प्रदेश, है ना, ये मध्य प्रदेश, इसके बॉर्डर पर यहाँ पर है अचना कमर, अचना कमर अमरकंटक, दिस इज द फुल नेम, अमरकंटक हिल्स। और ये से यू विल फाइंड नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर ओरिजिनेटिंग। ठीक है, now this is days and I hope you should be answering it, days, prominent days। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है, यस इट इज ट्रू। अच्छा, वर्ल्ड अर्थ डे, यू विल बी सरप्राइज्ड, दिस इज टुडे, नॉट 22 मार्च, 22 अप्रैल आज है। ठीक है, सो टुडे इज दिस, सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो जहां पे बी है काट दो। सो वी रीच द आंसर ACE। बाय द वे, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई, दैट इज ट्रू। इंटरनेशनल योगा डे में देखो कहां पे गड़बड़ा है, दिस इज नॉट 21 मई, 21 जून। And why is 21st June famous? This is very, very important, International Yoga Day, because it is the longest day in Northern Hemisphere। इसीलिए मैंने इसको ज्योग्राफी में रखा, इस क्वेश्चन को, है ना, Northern Hemisphere। ठीक है, ये पता होना चाहिए। Then World Health Day, है ना, तो ACE, A सही है, C सही है, ये गलत है, E। World Health Day 7th April 1948, what happened? WHO, World Health Organization, was established on this day। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन इज राइट, ACE। ठीक है, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, दिस वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपको पूरा देखना है, बहुत सारे डेज देखना, अभी हैव अ चैनल कॉल्ड लॉ इंटरेस्ट चैनल, अ क्लैट चैनल, प्रिपेयरिंग फॉर लॉ इंटरेस्ट एग्जाम, तो उस पर मैंने पूरा सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कराए। सो आप थीम स्किप कर सकते हो, डेज देख लेना, बिकॉज़ डेज आर आस्क्ड, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इंपॉर्टेंट डेज। अगर होगा तो वी विल डिस्कस हियर आल्सो। द नेक्स्ट इज डैश इज कंसीडर्ड एज सिटी ऑफ लेक्स, ये मैंने कई बार बताया है, प्लीज टेल मी। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसको बोला था वेनिस ऑफ द ईस्ट, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर, बताइए। Yes, the right answer is Udaipur. Yes, बस मां समरी, you're right, please the right answer। अभी मैंने जब डिस्कस कराया था थोड़ा देर पहले, just few minutes back I discussed। Who is the head of Union Territory of Pondicherry?
एक्चुअली क्या होता है टेक्निकली जो है ना सारे यूनियन टेरिटरी के हेड प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट टेरिटरी। ओके यस, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दिल्ली और पुडुचेरी में वी आर हैविंग, देखो दिल्ली में वी आर हैविंग लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। इन पुडुचेरी आल्सो वी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। इन अंडमान एंड निकोबार वी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इन अदर यूनियन टेरिटरीज वी हैव एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और सीएम वगैरह नहीं होते। लाइक वी हैव इन लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, ये सब में। सो जब हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी पूछा जा रहा है, सो द आंसर शुड बी प्रेसिडेंट, ठीक है, बिकॉज यूनियन टेरिटरी मींस इट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेन हेड तो प्रेसिडेंट होते हैं, although for all practical purpose lieutenant governor controls etc, but the answer would be A, ठीक है। yes, first summary, you're right, A is the right answer to this question, ठीक है। the next is name of the lakes and the states। देखो एक कुछ ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो with the help of the common sense। देखो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस, नैनीताल का नाम सुना है किसी ने? this you will find it in which state? it's why I'm saying, देखो कुछ तो आपको पता होगा, you must have heard Nainital is a very important tourist place in उत्तराखंड, है ना। उसी के बगल में भीमताल है, जस्ट सटा हुआ, नैनीताल भीमताल। सो डी का 1, सो डी का 1 यहाँ इस दोनों ऑप्शन में, सो इट मींस यू शुड हैव एलिमिनेटेड दीस टू। सांबर लेक थोड़ा देर पहले पढ़ा, राजस्थान में सी का 4, अब देखो यहाँ भी सी का 4 है। नाउ यू हैव टू गो फॉर आइदर ऑफ द टू। अब आपको पता होना चाहिए कि कुंभम एंड कंकारिया कहाँ है। सो अगर नहीं पता तो इस दोनों में कोई एक तुक्का मारना था, आइदर ऑफ द टू यू शुड हैव मार्क्ड। सो एक्चुअली कंकारिया इज इन गुजरात, Kankaria is actually in Gujarat, so B ka 3, so the right answer is option D, and Kumbum is in Andhra Pradesh, so 2 3 4 1, ठीक है। भीमताल in Uttarakhand, Sambar Lake to Rajasthan, and Kumbum in Prakasam district, Andhra Pradesh, ठीक है। Headquarter of G20, can anyone tell me? This is actually a wrong question because में कोई भी headquarter नहीं है, there is no secretariat, no headquarter of G20। G7 G20 का कोई हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। सो दीस आर द G20 कंट्रीज, ये 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ये होता है G20 में। करेंटली वी आर हैविंग 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज है और अफ्रीकन यूनियन के, ये सब होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। So these are the 18 countries. If you want to know more about G20, मैंने क्लास लिया है, जस्ट ये सर्च करना, you will get this on our law and trends channel, this video of G20 where which had happened last year in Brazil, तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। And the red ones are actually G20 members, जैसे यहाँ पे ये इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूएस है, कनाडा है, मैक्सिको है, ठीक है, टर्की है, सऊदी अरब है, फ्रांस है, यूके है। So these are the famous G20 countries, that is what you should know, ठीक है। And this year, the G20 summit is going to happen in Johannesburg, which is actually in South Africa. So this is all about today's class. Tomorrow on Wednesday, I'll be meeting you at 7 PM with current affairs revision. Okay. So do join me there also. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.